क्या चीज़ टेंस करती है बोर्ड एग्जाम के बारे में? When I have to study with the mind, with keeping my exams in mind, so I just have to just change my learning point of view. The temperament build up and the ability to work under pressure. लर्निंग आउटकम एक तरफ है और एग्जामिनेशन आउटकम एक तरफ है. अल्टीमेटली व्हाट सर्वाइव्स, व्हाट प्रिवेल्स इज एग्जामिनेशन आउटकम. The ideal answer sheet, the full marks answer sheets look the same, which actually is very weird. The boards have a very rigid answering key which we must adhere to, or else we lose on marks, and if we lose on marks then we lose on most of everything. So what is your suggestion? How can I do that? Since the problem is out of the box, we have to think out of the box. We can change the type of questions that we have in examination. Our paper should not be based on the kind of answer keys that we expect the board to have. Our logical ability. Because sir, our logical ability and how we analyze patterns in series plays a big role in how we can analyze critical situation. Instead of having an 80 marks for the paper and 20 marks for the practical, I feel that the practical should be extended to at least 40 marks. So इसके फ्लॉज के बारे में मुझे काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा है. मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का हम नया एजुकेशन बोर्ड बना रहे हैं. गुड मॉर्निंग. चलिए अभी मॉर्निंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तैयारी हो गई? चल रही है? कैसा लग रहा है? एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट है. थोड़ा टेंशन भी रहती है ना? थोड़ी रहती है. क्या चीज़ टेंस करती है बोर्ड एग्जाम के बारे में? One of the things that tenses me a little is that the paper won't be set by our school teachers. Like, our school teachers know us and our academic levels, so they set the paper according to it. But the paper will be set by the CBSE and NCERT professionals, and they don't really know us, so they won't know how well we can perform on what kinds of questions. So that's just a little scary. So टेंशन ये है कि हमारा जजमेंट वो लोग करेंगे. जजमेंट तो बाद में आएगा, पहले हमारी सुनवाई इस कोर्ट में होनी है जिसमें ना हमें वकील जानता है ना जज जानता है, और ऊपर से जजमेंट ऐसा आदमी लिखेगा जिसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता है. Another tension that we have, especially for 12th graders, is that when we give our board exam, that determines so much of our future. The marks that we get, our admission into colleges, the cutoffs that are set are all determined, and our future and like the college that we eventually get into is defined by the marks that we get in 12th to some extent. I think the fact that unnerves me the most about board examinations is that we've spent 13 years being assessed on the basis of our understanding. So if we're able to justify a point that we write inside our examination paper, then our teachers understand us enough to give us marks for that, because at the end of the day that's what matters to them, whether or not we understand it. But the boards have a very rigid answering key which we must adhere to, or else we lose on marks, and if we lose on marks then we lose on most of everything. ये जो एग्जामिनेशन की टेंशन है, ये क्लोजर टू एग्ज़ाम रहती है 10वीं, जैसे आप लोग अभी 10th या 12th में हो. सो 12th में आती शुरू हो गई थी कुछ, तो इस बार तो बोर्ड ईयर है. करने लगते हैं ना लोग, दूसरे लोग भी डरने लगते हैं. ध्यान रखना इस बार बोर्ड ईयर है. होता है ना? तो पढ़ते वक्त कोई सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हर एक सब्जेक्ट का कोई एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मुझे अगर कोई हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे खुद हेल्दी रहना आता है कि नहीं आता. सोसाइटी को समझने का कोई सब्जेक्ट है तो सोसाइटी मुझको समझ में आती है कि नहीं आती है, मुझे सोसाइटी में जीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका एक लर्निंग आउटकम है. साइंस मैथमेटिक्स का भी यही है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये आर्क, ये उसमें लटका हुआ पंखा, उसका डायमेंशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. बट लर्निंग आउटकम एक तरफ है और एग्जामिनेशन आउटकम एक तरफ है. तो जब आप पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, आपको लगता है कि लर्निंग आउटकम जो है, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, वो पीछे छूट जाता है और अल्टीमेटली व्हाट सर्वाइव्स, व्हाट प्रिवेल्स इज एग्जामिनेशन आउटकम. When I have to study with the mind, with keeping my exams in mind, so I just have to just change my learning point of view. So I have to make sure that I memorize each thing, and I have to mark those things that might come in the exam.
So my focus changes from how that might help me in real life to how that will help me in that 3-hour exam. खासतौर से जो 12th ग्रेड में है अभी, आपने एक बोर्ड एग्ज़ाम दिया है 10th का. डू यू फील कि वो 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था 3 घंटे का, जो उन्होंने अभी बोला कि मैंने 1 साल मेहनत की, चीज़ों को समझा, और अचानक एक 3 घंटे के एग्ज़ाम में मुझको जज कर दिया गया, उस जजमेंट में वो बहुत सारा छूट जाता है. कैन यू रिकलेक्ट समथिंग फ्रॉम योर लाइफ दैट यू फील कि दिस मार्कशीट ऑफ 3 years judgment does not reflect me? What is that missing point? Can you share something? So when we approach a problem inside the classroom, it isn't simply a concept. Our teachers make sure that we can analyze it and apply it to the real world, and most of us, if not all of us, are very good at it. But that isn't something that we need to do inside our examination hall. So it's just a mere statement of fact and not an application of it or an analysis of it. And that's often very restrictive because for people, for instance, in history, we used to have, if a certain event had not taken place in a certain way, then what would have been the consequences and how would the world have looked? When we're used to answering questions like that, questions which really do take a lot to answer and which require a lot of thought process, and then suddenly all you're learning is reduced to state these 8 points in the book or else you lose on everything, it can be quite vexing. So if the education minister, if I ask you कि भाई I want to change this, आपका जो एनालिटिक्स का पार्ट है, आपका वो भी इवेल्युएट हो और वो आपके बारे में जो जजमेंट लिखा गया है, सो कॉल्ड मार्कशीट, वो अल्टीमेटली आपका जजमेंट है, उस जजमेंट में वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो व्हाट इज़ योर सजेशन? हाउ कैन आई डू दैट? स्टूडेंट से समझना चाहता हूँ. हाउ डू वी डू दैट? what systems we adopt in our exam system so that you feel satisfied? Since the problem is out of the box, we have to think out of the box. Vivas are concept based. They do ask you to analyze a lot of the situations and a lot of the events that you study. So perhaps if a bigger percentage of our grade could be devoted to that sort of assessment, it would be more reflective of the people we are and of the understanding we actually have. More than Vivas, I think one thing we lose through this education system, frankly, is A lot of our personalities, the things we're fascinated with, the things we enjoy, the things we're good at. So focusing on a system where, for example, we ask the student to, we give the student a certain theme and we ask them to explain that, research about that, learn more about that on their own, and then present it in a way that is like individual and like the best to them. I think that would also first highlight researching skills, analytical skills, but also help us really understand the person itself, because there is a person. Because in regular examinations, all the answer sheet, the ideal answer sheet, the full marks answer sheets look the same, which actually is very weird. So what's the course suggestion? Like, what's your name? Sumati. Like Sumati said कि external examiners का जो स्टेक है, जो उनका रेशो है, वो बढ़ना चाहिए उनके द्वारा किए गए असेसमेंट का. व्हाट इज योर सॉल्यूशन? My solution is that instead of having a certain amount of like 10 minutes for a Viva where people answer questions and we evaluate that analysis, we give like for example a month for a project which any child can do, and then external examiners can evaluate that project, like whatever it is, like a story, a song. We can change the type of questions that we have in examination. So for instance, in mathematics, we are just told to solve this particular question. But the whole deliberation that goes on to how we have to solve this, if I have this kind of a problem, what do I need to look for? What kind of things do I need to look for in order to solve this? That needs to be checked rather than if I have done addition, multiplication, subtraction correctly or not. Similarly, I think that our papers should not be based on the kind of answer keys that we expect the board to have. Say for instance, we have a question on how does globalization and liberalization, how have these concepts affected India? So we should be allowed to write certain points that are not included in the textbook but are valid, but are correct, and the points that we see happening around us. So the answer key should not reflect our own paper. Our paper should reflect our own personalities and our thoughts. So entire education system has become is being kept by
द आंसर कीज। पूरा आंसर की ने गुलाम बना लिया पूरा एजुकेशन सिस्टम को, है? इससे आज़ादी चाहिए। So there are two ways to look at this. One, we might think that the answer key does restrict the answers that we can give, but we also see when we are checking the paper, the checker itself needs some reference so that they can see that, okay, this is the answer that was expected. I know that having, like, expecting a particular answer does create flaws in the system, but when you're checking, like, especially the 12th board and for admissions into the college, you need a standard checking for it. So I think that is the role that the answer key tries to play. Coming to the suggestions of making it more inclusive of our other abilities rather than just the textbooks that we are given. Instead of having an 80 marks for the paper and 20 marks for the practical, I feel that the practical should be extended to at least 40 marks, because and not just the projects that we're making, but also the extracurriculars and how relevant those extracurriculars are to the subjects that we've taken. So for example, if a child is studying political science and the child is taking part in a lot of debating, we see that these two complement each other, and then professions like international relations are suited for the child. And especially if you look at these two activities together, you feel that the child has done beyond the textbook to achieve what they want to do in their future, what profession that they want. थैंक यू। मुझे लगता है कि बहुत वैरायटी ऑफ इनपुट्स हैं। ये एक्सेप्टेंस तो सबको है कि ये 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से तो काम नहीं चलता है। दिस डज नॉट मेक अस सेटिस्फाइड। हमारा एवोल्यूशन केवल 3 घंटे में हो जाए हमारी 1 साल की मेहनत का, और वो भी एक टीचर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी टीचर, 10 मिनट में उसकी हमारी आंसर शीट को देख के कर दे, एंड दैट टू बेस्ड ऑन सम आंसर स्क्रिप्ट। ये तो फ्लॉज हैं इसमें। तो इसके फ्लॉज के बारे में मुझे काफ़ी कुछ समझने को मिल रहा है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का हम नया एजुकेशन बोर्ड बना रहे हैं, और दिल्ली के नए एजुकेशन बोर्ड में आई डोंट वांट टू रेप्लिकेट व्हाट सीबीएसई इज़ डूइंग। फिर तो सीबीएसई भी अच्छा ही है, कि दिक्कत थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हो, अगर ये नहीं लाए तो फिर तो दिस इज जस्ट अनदर हेडक्वार्टर, कि एक टेस्ट होता था वो सीबीएसई हेडक्वार्टर से चलता था, एक टेस्ट होगा सिमिलर नेचर का वो दिल्ली के हेडक्वार्टर से चल दिया करेगा। तो उसको बनाने में आप लोग, और ये डिस्कशंस हम लोग वाइड स्प्रेड डिस्कशंस कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। Sir, to consider the fact that our education system or what we are studying now is just based on what is written in our textbooks, I feel, sir, one more aspect should be introduced in our examinations, which is, sir, our logical ability. Because, sir, our logical ability and how we analyze patterns in series plays a big role in how we can analyze critical situation if, for example, we are working in a corporate world. So, sir, this is one factor which I feel should be included, and sir, the verbal ability also should be included. The way we speak, our communication skills, which is also was talked about by my peers, the vivas should be increased. Sir, I think these are two major factors which could play a role in the betterment of the examination. देखो, मैं आप राजली 12th में हैं, मैं आपको तो अश्योर नहीं कर सकता कि कुछ चेंज करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, पर कोई हमारे लिए आज़ादी दिलाने के लिए लड़ा था तो आज हम आज़ादी में बैठे हैं ना। तो आज अगर हम एग्ज़ाम 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से आज़ादी में लड़ गए ठीक से, तो कोई और जनरेशन यहाँ बैठी होगी जो उसको एंजॉय कर रही होगी। इसलिए आज आपके इनपुट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनी अदर इनपुट फ्रॉम एनी? यस, बोथ ऑफ यू। Our school keeps a rubric for a particular kid. So they analyze our growth, our resilience towards a subject or a chapter, the kind of interaction we have in our classes. I think that could be maintained for each student too, to actually reflect on the kind of personalities and growth and whatever we show in classes, except for studies. What my suggestion is that I have no issues with the answer keys and the strict system. I think the major problem that kicks in during the examination is the temperament build-up and the ability to work under pressure. I think these are the qualities that a major majority of people lack, and I think this is one aspect that keeps us behind from writing the examinations in a proper way. I think the 3-hour examination is not a problem when we look at the system. The problem is that we guys are not prepared enough to work under pressure. We're not ready with the life skills that we should be at that point of time. So my point being is that the syllabus is not a problem. I think I come from the science background. What I see is that the syllabus is very well laid out. It covers majorly all the concepts of basic science. I have no issues with the syllabus, but just the fact that more of temperament build up and more of the ability to work under pressure
should be a part of the curriculum that makes students comfortable enough when they sit in a 3-hour examination. Because there are a lot of instances where students, the preparation is not a problem for them, but they're not able to perform the 100%. So this high stake character of this 3-year exam is the problem. It's too much of high stake. है ना? I believe more emphasis on life skills and how people should deal with under pressure, how we should be able to manage our time. That should be a part of curriculum while growing up in school, because it is also a part of our life when we are in a job, when we are in college. So these things will be with us throughout. So if we ignore our life skills in school, it is not a very good precedent, I believe. लाइफ के ज़्यादातर टेस्ट्स इनविजिबल होते हैं, ज़्यादातर। आप जॉब करोगे उसमें भी ज़्यादातर चैलेंजेस इनविजिबल आते हैं। आप कॉर्पोरेट में करिए, आप अपना कुछ करिए, आप गवर्नमेंट में करिए, मैक्सिमम चैलेंजेस कम्स एज इनविजिबल। आपको चैलेंज सामने आ जाता है, आपको शाम तक सॉल्व करना है, तो आप यू कैंट प्रिपेयर फॉर दैट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हमारा सारा टेस्टिंग सिस्टम हमको इतना वेल डिक्लेयर्ड चैलेंज देके कहता है आज से पढ़ना शुरू करो, आज से 1 साल बाद तुम्हारा एग्जाम लेंगे, और इतनी टेंशन क्रिएट कर देता है उसमें, तो इसको तो बदलना चाहिए। If the pressure could be divided for the whole year, it would be very negligible. So this is the kind of evaluation policy that we as children have gone through in the entirety of the junior school of this school. So we do not have any conventional pen paper tests per se, but we have checks for understanding, entry ticket, exit ticket, to actually make us self-aware about what do we lack in what kind of concept and where do we need to work on. And that all the culmination of all these checks and thoughts finally make our report card that also do not give us grades but tell us where are we in terms of what kind of skill. So logical ability, communication skills and certain things like that. So if that could be made if that kind of concept could be laid out at a very standard and national level or perhaps the state level, then that would be very helpful for kids of future generation. I think that we've talked about the examinations, how we can change it, but looking forward to what is coming, I think that we have to sit board examinations, and the situation is, when we thought that it's stabilized, it is still going downhill. There are cases on the rise, and I think that we as students and our parents would not be very comfortable in sitting in different schools to sit this examination. So if it's just a suggestion, if we could sit these board examinations in our respective schools with external invigilators, so that both the parents, students and the board has some sort of reassurance. एक तो ये है कि ये जो 3 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाता है, इसको और कैसे बेहतर तरीके से लिया जाए, एक तो ये है। लेकिन क्या सिर्फ 3 घंटे के एग्ज़ाम के आधार पर हम जज कर दें बच्चे को 1 साल की मेहनत को, वो दूसरा है। तो उन दोनों पे काम करना पड़ेगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम एक रियलिटी रहेगा, बट वो कितना रहे, उसकी वैल्यू क्या रहे, और साथ साथ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कैसे रहे, ताकि आपके 360 डिग्री निकल के आ सके पर्सनैलिटी का उसमें। दैट इज़ देयर। मैं US में गया था, बॉस्टन में, और वहाँ ऐसे ही एक इंडियन फ्रेंड के घर पे था, दे होस्टेड मी देयर। उनके बेटे का एग्ज़ाम था ग्रेड 12 का, एंड ही वाज लाइक कि आई एम गोइंग फॉर चिल विद माय फ्रेंड्स, पिकनिक करके आ रहा है। तो मैं उस दौरान ही गया था, और मैंने देखा कि तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हमारे यहाँ 12th के एग्ज़ाम में घर में जो माहौल होता है या देश में जो माहौल होता है। मैं उससे पूछा, यार तुमको टेंशन नहीं होती है? बोले टेंशन किस चीज़ की है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो हाई स्टेक एग्ज़ाम हमने बना रखा है, हमने उसको वन ऑफ कर दिया है एकदम, और कट ऑफ है फ्रॉम द एंटायर पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग से। वो हमारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को ही जज करता है। सो इसको चेंज करेंगे। मैं अभी नहीं कह रहा कि अभी चेंज हो जाएगा, आपको तो उसी से देना पड़ेगा, बट आई लुक फॉरवर्ड फ्रॉम यू कि आप लोग मुझे और आगे भी सजेशंस दें। आई नो लॉट ऑफ यू हैव lot of things to say. I know you have exams to write. You are preparing for the same thing that I want you to help me change and challenge. If not right now,
I'm very impressed with your understanding of the facts, what you are saying. Whenever you get time, a lean period in your preparation or maybe after exams, I would like to have something, some concrete examples. जैसे आपने बोला या शायद आपने बोला कि मैथमेटिक्स का वो सवाल आप ऐसे क्यों पूछते हो मुझसे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछो ना, आप मेरे को रोट लर्निंग के बारे में मैथमेटिक्स पूछ रहे हो. सो इफ़ यू कैन गिव मी सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स इन दैट राइटिंग, कि मैं जब एग्ज़ाम में बैठी तो मुझसे 10वीं के एग्ज़ाम में आपने ये पूछा, आपको इसकी जगह मैथमेटिक्स के 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको मुझसे ये पूछना होता तो मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा निखर के आती, मैं ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग का आपको पता चलता. अभी आपको मेरी रोट लर्निंग का ऐसा नहीं है कि दुनिया में 3 घंटे की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं. जिन देशों को देख के हम बहुत अभिभूत रहते हैं कि ये तो बड़े अच्छे रहे होंगे, हम चले जाएँ वहाँ नौकरी करने चले जाएँ, हायर एजुकेशन के लिए चले जाएँ, वहाँ भी टर्म एंड एग्जामिनेशन है, बट उसकी औकात टर्म एंड एग्जामिनेशन की उतनी ही है. एक तो उसका मेथड अलग है, दूसरा इतने सारे कंटिन्यूस मेथड्स वो अपनाते हैं जो आप में से कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किए. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू थिंक, राइट व्हेनेवर यू गेट टाइम, बिकॉज अगर ये 11th का ग्रुप होता तो मैं बोलता कि फिर अभी जल्दी लिख दो, बट प्रायोरिटी आपकी है, आपको अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप लोग करते रहिए. बट व्हेनेवर you have some time for me, please do. That's a contribution for next generation.